So in previous session, we were discuss about the virtual function, syntax of virtual function with example, how the virtual function is work and what is the calling scenario of virtual function. And after that, uh, we were discuss about the some of rules that we have to follow whenever we declare or we can use the virtual function. After this, there will be a working scenario, or we can say the working of virtual function. So we already seen the working using program, or we can say using theoretical analysis. All these things we have already discussed in previous session, and we get a slight idea about the working of the function, or we can say virtual function. So there will be some important things we have to discuss, because of these things are used in upcoming topics like abstract class and pure virtual function. That's why we need to discuss them. Okay. So in the working scenario, you can see there will be some points are mentioned. uh, we have to discuss all these points one by one. First, here, first point mention the function call and the function definition, about the calling scenario and about the definition scenario. Whenever we define a virtual function, we need to add a word virtual with the function, है ना? Or some more things we have to know about that, कि हम रिटर्न टाइप यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, हम कुछ वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन all these points in rules of virtual functions. Okay. Second point, you have to read once. When the compiler knows, okay, if the compiler knows, whenever the compiler get information about that particular function, which function is called before execution. अगर आपका कंपाइलर ये जान जाता है कि कौन सा फंक्शन आपको पहले एग्जीक्यूट करना है या कौन सा फंक्शन कब एग्जीक्यूट करना है एट कंपाइल टाइम, यानी एग्जीक्यूशन से पहले, है ना, देन इट इज known as early or static binding. We already discussed in previous session. अगर कंपाइल टाइम पे ही सब कुछ हमें पता होता है, then that will be early binding, or we can say static binding. And if we talk about the late binding, or we can say the dynamic binding, that will be of, we can say, happen at the execution time. For these kind of things, or these kind of functions, we don't have any idea. It means compiler don't get any information about that. Okay, which function call on which time. Okay, so that will be actually finalized at the execution time, whenever the function required, and when which function is called and which function is executed. All these things are actually performed on the execution time. So these kind of functions, these uh, occurs at execution time, or we can say execute as on the execution time without any pre-information, then these are known as dynamic or late binding. कंपाइल टाइम में उनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी हमारे पास
कि एक्चुअली वो फंक्शन कौन सा फंक्शन कब कॉल होना. ओके. For these late binding functions, we have to use objects of type of we can say pointers, है ना. हमने कल एग्जांपल में यूज किया था ना, बेस क्लास का पॉइंटर बनाया था. सो वी हैव टू पॉइंटर ऑब्जेक्ट हियर. Okay, why the pointer? Why the pointer object? Because of it invoke at the execution time. So at that time, what is the reference with us for the execution? So उस रेफरेंस के लिए हमें उसका एड्रेस एक्चुअली चाहिए होता है, ताकि उस एड्रेस से हम एग्जीक्यूशन टाइम पे उसको कॉल कर सके. देखो कंपाइल टाइम पे ही सब कुछ फिक्स हो जाता है कि कब कौन सी इंस्ट्रक्शन कॉल होनी है, कब कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, सीक्वेंस क्या है. ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड एट द compilation time, but some of things are not decided at the compilation time, and at the place of these kind of things we have to prefer address of these things. Okay, so हम उस टाइम पे उस एड्रेस पे मूव कर सकते हैं. Actually, the late binding means it is a link link between the function call and function definition. Okay, because of always function called at the execution time, not at the compilation time. Next one, the keyword virtual prevent the compiler from performing early binding. वर्चुअल क्या करता है, कंपाइलेशन टाइम में इसको इग्नोर करने का काम करता है. यानी कंपाइल टाइम के अंदर ये डिसाइड नहीं किया जाना चाहिए कि एक्चुअली कौन सा फंक्शन कहाँ कॉल होगा. देखो इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. देयर विल बी ए मेन फंक्शन, है ना. जस्ट एक सिंपल सा सिनेरियो हम समझते हैं. यहाँ पे मान लो कुछ इंस्ट्रक्शंस आपकी है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे आपने दे रखा है, एक फंक्शन को कॉल कर रखा है सम. ओके, प्लीज म्यूट योर माइक्स. 4 एंड 5. मान लो ये इंस्ट्रक्शंस आपके प्रोग्राम में, और आपने एक फंक्शन बना रखा है सम नाम का. ठीक है, और इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं. कौन सी है? ए, बी एंड सी. देयर आर 3 इंस्ट्रक्शंस. तो ये प्रोग्राम जब कंपाइल होगा ना, तो एक्चुअली सीक्वेंस क्या बन जाएगी कंपाइलेशन के बाद में? इस प्रकार से सीक्वेंस बन जाएगी कि ये प्रोग्राम रन होगा, पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन, फिर ए, फिर बी, फिर सी, और फिर फोर्थ इंस्ट्रक्शन, और फिर फिफ्थ इंस्ट्रक्शन. इट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन. इट मीन्स जो फंक्शंस की इंस्ट्रक्शंस थी उसको भी हमने वही इंसर्ट कर दिया है जहां पे वो एग्जीक्यूट होनी है. कंपाइल टाइम में हम यही करते हैं, हमारा कंपाइलर यही करता है, उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज कर देता है. बट यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, सेम नेम के 2 फंक्शन है. देन यहां जो इंस्ट्रक्शन एक्चुअली इंसर्ट की जाएंगी वो कौन से फंक्शन की इंसर्ट की जाएंगी? इट इज द प्रॉब्लम, है ना. इसलिए हमें यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा,
वर्चुअल कीवर्ड को जब आप यूज करोगे तो ये कंपाइल टाइम में इस काम को करेगा ही नहीं। इसको ये एबीसी यहाँ इंसर्ट करेगा ही नहीं 3 नंबर पे। ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही लेकर चलेगा। रन टाइम में जब हम 3 पे जाएंगे तब ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। ये मेनली वर्क होता है आपके वर्चुअल कीवर्ड का। ओके, है ना, इसलिए हम वर्चुअल यूज करते हैं ताकि वो उसको वर्चुअल स्कोप बना देता है कि भाई ऐसी कोई चीज रियल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो जब रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है देन आपको उसको इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में पुट भी नहीं करना है ना। दैट्स इट। The working of virtual functions mainly dependent on vtable. What is vtable? That is virtual table. And vptr. It means virtual pointer. What is both of them? You can read the given instructions. Vtable is a simple table, or we can say a table of a function pointer, and it is maintained per class having virtual functions. ये कंपाइलर के अंदर टेबल होती है, ठीक है, जो कि प्रत्येक फंक्शन के लिए वहां पे एक्टिव होती है, ठीक है, फंक्शन पॉइंटर्स के लिए। और ये क्या करती है, मेनली वो सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करती है जो उस फंक्शन के बारे में वर्चुअली डिक्लेयर की गई है। ओके, सो फॉर वर्चुअल देयर विल बी अ सेपरेट टेबल फॉर मेंटेन स्टेटस दैट इज नोन एज वी टेबल, और वी कैन से वर्चुअल टेबल। Okay, and there will be a pointer of named v pointer that always point out or always indicate that particular table, v table। ठीक है, वी टेबल तो आपके वर्चुअल के स्टेटस को स्टोर करेगा, मेंटेन करेगा, और उसको एक्सेस हम किसकी सहायता से करेंगे, वी पॉइंटर की सहायता से। देयर विल बी अ पॉइंटर and pointer always point to the that particular v table। Okay, and next one, what is the next? जो v pointer आपका होता है, v pointer addresses are calculated at the runtime depending on pointers of the virtual table functions। It means we can say v pointer point out the table, uh, v table, but it is always calculate the address at the execution time only। It not perform the calculation or address calculation at the compile time, है ना? Only perform on the runtime। If a class contains a virtual function, then the compiler is itself does two things. Very important uh, concept. You have to focus on this particular statement. I read it once again. If a class contains a virtual function, understand that, है ना? If your class holds a virtual function, then the compiler itself does two things. Which two things? आपका कंपाइलर अपने आप दो चीजें करता है, और वो दो चीजें क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड, जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपका जो वर्चुअल पॉइंटर है वो आपका वहां पे ऑटोमेटिकली आकर हो जाएगा। ठीक है, और ये मेनली किसको इंडिकेट करेगा? वर्चुअल टेबल को इंडिकेट करेगा। तो वहां पे एक वर्चुअल टेबल क्रिएट होगी
एक वर्चुअल पॉइंटर क्रिएट होगा और वर्चुअल पॉइंटर इंडिकेट किसको करेगा, वर्चुअल टेबल को करेगा। ठीक है, और ये प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए होता है। You have to remember that it is repeated for the every object of the class. Okay. Next one, what is next? Irrespective of the object being created or not, a static array of functions pointers called vtable in created where each cell contains the address of each virtual functions contained in the class. थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, but we will understand it step by step. What is the mainly steps here? If we talk about, then there will be we can say a object, whenever a object created, or we can say node क्रिएट हुआ हुआ है या क्रिएट नहीं हुआ, उसके अल्टरनेट में क्या चीजें काम कर सकते हैं, देयर विल बी ए स्टैटिक एरे ऑफ फंक्शंस। वहां पे एक स्टैटिक एरे होता है फंक्शंस का, जो कि उन सभी फंक्शंस की इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे मान लो आपकी क्लास के अंदर 5 फंक्शंस अवेलेबल है, देन देयर विल बी ए स्टैटिक एरे एंड स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इन द at the level of 0 of the array, or we can say the index number 0 of the array. Okay, then second one at the first location and third one is the second location. All these data or all these information are stored in the array kind of form. Note, a pointer can hold 8 bytes of memory to store the address. Okay, तो यहाँ पे हम मेनली 8 बाइट पे हम बात करेंगे। अगर एक पॉइंटर आपका 8 बाइट लेता है, देन व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन हियर वी हैव टू परफॉर्म। नाउ we will talk about the abstract class, but in abstract class or in pure virtual function there will be a very important role of we can say the virtual function also, because of without virtual function you cannot create a abstract class, or we can say without pure virtual function. So what is the abstract class here? A class जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन बना हुआ हो वो ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट क्लास मानी जाएगी। ओके, ए क्लास विद प्योर virtual function is always known as abstract class. Okay, one more thing you have to focus that अगर किसी क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है, ओके, then you can't declare the variable for that particular class. Okay, you remember that. अगर आपकी क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन बना हुआ है तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। यू कांट क्रिएट द ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट। Here
abstract class always inherited from the derived class. It is play the role of base class always. प्योर वर्चुअल फंक्शन ओनली बेस क्लास में हो सकता है और बेस क्लास प्योर वर्चुअल फंक्शन ऑलवेज बेस क्लास का मेंबर होगा और वो उस बेस क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते. ओके, रिमेंबर दीज टू थिंग्स. ओके, आफ्टर दैट इनहेरिटेंस तो हमें यूज करना है यहाँ पे बिकॉज ऑफ यू हैव टू डिक्लेयर द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द बेस क्लास. सो वी हैव टू inherit that particular class by the another derived classes, but you remember that you have to override that particular function that declare in mode of pure virtual. है ना. अगर आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन बेस में बनाया और बेस को इनहेरिट किया है तो आपको 100% उनको ड्राइव्ड क्लास में ओवरराइड करना ही पड़ेगा. अगर आप ओवरराइड नहीं करोगे देन देयर विल बी प्रॉब्लम. इसका रीजन क्या है देखो यहाँ पे पढ़ो आप in third statement. If the derived class does not override, अगर वो ओवरराइड नहीं करती है द प्योर वर्चुअल फंक्शन को, बेस क्लास का जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसको अगर ओवरराइड नहीं करते देन द derived class also becomes an abstract class. तो फिर आप उसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे, है ना. वो भी ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी. चाइल्ड भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी. अगर पेरेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो चाइल्ड भी क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी. अगर आप ओवरराइड नहीं करते हो तो. ओके, दैट्स व्हाई वी नीड टू override the base class function that is defined in uh, form of pure virtual function. Next point, abstract classes cannot be intensed, but the pointers and references of abstract class type can be created. Okay, what is here? अगर आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो एक्चुअली इंटेंस्ड नहीं है. इंटेंस्ड का मतलब है कि हम कहीं भी उसको ऑब्जेक्ट के साथ या मेन फंक्शन में कहीं भी हम उसको मेंशन नहीं कर रहे, है ना. देयर इज नो ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास और देयर इज नो कॉलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास मेंबर्स, है ना. ना तो हम उसके किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. देन देयर विल बी द जस्ट नेग्लिजेंस, है ना. तो आप इंटेंस नहीं करते हो उसको, है ना. बट द पॉइंट एंड रेफरेंसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप कैन बी क्रिएटेड. उसके बावजूद भी आप पॉइंटर्स और रेफरेंसेस उसके लिए क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. व्हाट इज नेक्स्ट हियर? Abstract class can have constructors. You can use all categories of instructions with the, we can say, best class. So abstract class के अंदर आप सारे के सारे कंस्ट्रक्टर्स यहाँ यूज कर सकते हो. अगर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अवेलेबल है then the class reserves a slot for a function in the v table, है ना. इसलिए हमें वर्चुअल के बारे में पढ़ना जरूरी था. बिकॉज ऑफ हियर we can see the terminology of v table or we can say virtual table is used. अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर
वर्चुअल प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन करते हो तो वो क्लास एक अलग से मेमोरी स्लॉट रिजर्व करेगा और वो कहाँ करेगा आपके वर्चुअल टेबल में करेगा बट वहां पे ये कोई स्लॉट उस स्लॉट में कोई एड्रेस वहां पे पुट नहीं करने वाला है because of that is table not a uh, we can say individual memory location. Okay, then what is next here? As the v table for an abstract class is incomplete, it means why it is incomplete. आपकी v table जो है अगर एक ऑब्जेक्ट क्लास के लिए बनी हुई है तो वो इनकम्प्लीट कब है? Hence the compiler will not let the certain of the object for each class and will display the error bit message whenever the user sees. Okay, so it will be the concept of we can say the abstract class. There are some points these we have to remember. First point, abstract class always have a pure virtual function. Okay, you have to remember that. And you have to next, what is the next? You have to override that particular function in the derived classes. Okay, and what is third? Third point is that you can use constructors in your base class. Okay, and then what is next? Next is pure virtual function takes space always in the uh, table named v table. We can say virtual table. Okay, so these are the points you have to remember. Now we will talk about the pure virtual function. What is pure virtual function? What is difference between virtual function and pure virtual function? मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. In virtual function we will declare function with virtual keyword, but in pure virtual we have also defined with virtual. ठीक है, उसके बाद आपकी रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम. सपोज द फंक्शन नेम इज एबीसी. Here also ABC. Okay. Virtual function have a function body. You can give the message or you can give when which is you want to give. But in pure virtual function, there is no body of the function. Just you have to initialize by the zero this function. It is the difference between virtual function and pure virtual function. In virtual function, there will be body and you can write in the body your instructions or your statements. But in pure virtual function, there is no function body. You have to initialize that function using zero. It is the difference between virtual and pure virtual. Okay, दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes or no? Students, Yes, sir.
Difference is clear? Okay. Then there will be some instructions, or we can say some points that define the pure virtual function or explain about the pure virtual function. Uh, so we have to discuss them. What is they are here? A pure virtual function is don't have definition. It is just have declaration. है ना, फंक्शन की डेफिनेशन होती नहीं है एक्चुअली, नॉट डेफिनेशन विद इन द बेस क्लास. And what is the pure virtual function typically have a declaration, only signature की जरूरत है. There is only requirement of declaration, no definition. Okay. When a member base class member function is empty, then do nothing function, or we can say known as with name of dummy function. इन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? डू नथिंग फंक्शंस या फिर डमी फंक्शंस, क्योंकि इनका कोई काम तो होता ही नहीं है ना, ये कुछ भी परफॉर्म नहीं करते हैं. दे आर जस्ट डिक्लेयर्ड, है ना, ओनली डिक्लेयर किया जाता है. इनके नाम से काम किस में होता है? ड्राइव्ड क्लासेस में होता है ना. बट बेस क्लास के अंदर इनके नाम से कोई काम नहीं होता है. जस्ट यू हैव टू डिक्लेयर देम. ओके. Okay, then there will be declared in the base class and cannot be used for any operation. आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते प्योर वर्चुअल फंक्शन की सहायता से. ओके. क्लास जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन किया गया है कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिक्लेयर ऑब्जेक्ट्स. आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर नहीं कर सकते. ओके. उन क्लासेस को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं. ये हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अभी अभी पढ़ा था कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं. और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब होती है? जब उसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है. इट मींस अगर आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज किया बेस क्लास में, देन यू कांट डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास. ओके, नेक्स्ट. व्हाट इज नेक्स्ट? इफ अगर आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो उस क्लास के लिए, देन देयर विल बी सम काइंड ऑफ एरर्स डिस्प्ले बाय द कंपाइलर. ओके. Okay, what is next? Pure virtual function or pure virtual, we can say the method, or we can say the function, the meaning will be same. It's virtual function that is required to implemented by a derived class. है ना, सेम वर्चुअल क्लास वाले कॉन्सेप्ट है. हम डिक्लेयर बेस क्लास में करेंगे, बट हम इसका यूज किस में करेंगे? ड्राइव क्लास में करेंगे. ओके. अगर आप ड्राइव्ड क्लास में इसका यूज नहीं करते हो तो आपकी ड्राइव्ड क्लास भी ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी. सो यू हैव टू यूज द बेस क्लास प्योर वर्चुअल फंक्शन in your derived classes. Okay. All the derived classes without pure virtual functions are called as concrete classes. They can be used to create objects. ठीक है, उन सब का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो. व्हाट इज द फॉर्मेट हियर? वर्चुअल कीवर्ड आपको लिखना है, रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम, और उसके बाद 0 से इनिशियलाइज करना है. ये अगर इतना इतना हम देखें, दैट इज द वर्चुअल फंक्शन, एंड इक्वल 0 कर दिया तो इट इज ए प्योर वर्चुअल फंक्शन. ओके. सी प्लस प्लस में एक क्लास होती है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं,
और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एटलीस्ट कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए, तभी वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है प्योर वर्चुअल फंक्शन का। यू कैन सी बेस क्लास प्योर वर्चुअल फंक्शन है ये, वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले इक्वल टू 0। जैसे आपने इक्वल टू 0 लिखा, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया। देन व्हाट इज नेक्स्ट, ए क्लास ड्राइव्ड और इनहेरिट किया जा रहा है बेस क्लास को, ठीक है। देयर विल बी ए मैसेज, दिस इज ड्राइव्ड क्लास डिस्प्ले, okay. Then what is in main function, we have to create the object of only that particular class, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो केवल किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा, पॉइंटर टाइप का। आप इसमें सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर जैसे आपने सिंपल ऑब्जेक्ट बना दिया तो ये ड्राइव्ड क्लास भी क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी, ओके। So it will be the main idea of pure virtual function, and we can say the uh, abstract class. Okay. इसमें कुछ है क्या, एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, ठीक है, वो हमें दिख रहा है, दैट विल बी द प्योर वर्चुअल फंक्शन while accessing display method through a pointer object, it will be called the derived class display at runtime, okay. So if we talk about the calling scenario after creation of the object, ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दें, अब हम एड्रेस ट्रांसफर कर रहे हैं ओ बी का किस में, पी में, एंड पी से कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले को। इट विल एक्सेस द डिस्प्ले मेथड ऑफ ड्राइव्ड क्लास, इसको ये एक्सेस करेंगे, okay. So it is the basic idea of the pure virtual function and abstract class.